Hello, friends, a very warm welcome. And in the paper two here, we will be taking up understanding and try to enjoy and learn what we can definitely see and what we should be actually do. So, going through the paper, understanding it in a simple perspective, and appreciating all the hard work and all the efforts that a person makes to make sure that we are able to convey, we are able to understand, we are able to enjoy the process of making a change not only for the self but also for the society at large. That is why the first question says, what are the crucial functions of empirical political theory in comparative politics here, comparative politics, whatever it is, we can say. Crucial functions. So comparative politics uses empirical method to establish political economy as well as sociological comparison between different systems of government structure societies. Very beautifully placed up in a one flow. Crucial function. But let me go back to the question again. The question is asking to comment. Actually, we have to comment on the five questions. So that's why we are moving. Crucial function of empirical political theory. It is fact based, driven by data quantification, for example, electoral data. Logical deduction based on context and facts given under method. It is value neutral as it only tool for comparison. Multifaceted and multidisciplinary standard used to come up with conclusions. That is Atul Kohli when it is talking about caste class in, you know. Thus it creates a condition where best models and structures can be studied, applied to the societies for elective government. Yeah, Gabriel Arnold, and he is talking about political culture. However, by meeting the crucial function, sometimes it loses the core normative value, which comes under uh, quarter, yeah, which causes, I should say, which causes quarter, which causes question of relevance of political theory. So norms plus empirical method creates a sustainable model. For example, Kaplan theory, traditional elections. I think very beautifully placed. But then where we were speaking about that following are the essential functions of political theory. There, rather than putting up like that way, if you were able to narrate it, or if you are able to put it up in a para format and thereby the speciality, or they were bringing not directly just telling what the comparative what that feature is, rather than talking about the feature or function or speciality, because the question is asking to comment. So like the way last paragraph is coming up, first paragraph was fine. So in between the core part where we are talking about that, this is the ingredient of this question. There we could have just swiveled, for example, by writing that how over quantification have affected, or how empirical data usage had created this kind of special edge or this kind of constraint. So that would have given the complete justification, and it would have been amazing. Second is comment on what are the difficulties faced by political theorists in comparing the states. I repeat, what are the difficulties faced by a political theorist in comparing the states? So we have to comment on this. States are formed based on social contract between society and individual to protect the interest of society and individual. That is okay, general statement we can say. So as cultures are different across the globe, comparison of states becomes very difficult. They face several difficulties. Agreed. So first paragraph must have been, even if we can write this much, we could have spoken about that political theorist understands the need to compare different states, thereby understanding different regional differences and also different kind of cultures, societies, economies. So already we are commenting on the challenges faced by political theorists. Then second paragraph, culture and tradition history affecting formation of a state in a different manner is correct. But then this could have been a political theorist if is trying to understand or trying to create a framework for India, then it will be facing such kind of
difficulty, and in comparison to Africa, South Africa, it will face such kind of difficulty or such kind of challenge. So the established framework is not sufficient to address the new developing societies, and that is why a political theorist will look forward to bring new domains or new variables, and Eurocentric will model will not the work, will not be working. Multiculturalism, the principle of Edward Said, Oriental studies, it is very, very famous all over the world. Multiculturalism, Edward. So these ideas become the center point and not the previously existing model. Development standards are very different, as I already said in that above point. So point number three becomes general. And then in the third point also, like we are talking about development trap uh, by F.W. Riggs. This is very important. So political theorists, if using the core ideas of F.W. Riggs in the same way, then also it will be facing a challenge because it will not be points are correct, but the context has to be a little bit of molded, and the correlation becomes difficult. So there is need for integration of different theories to come up with the inclusive one. So the where we are ending, we can already, as I said in the beginning, that a political theorists yearning to bring the best for a state. It will be, it will be many unseen and many tangible and intangible challenges will be there. That's how one can always say. Comment on how does democratic politics construct citizenship? Very good question, a very broad question. How a democratic politics constructs citizenship? Citizenship is very core issue. It is not an issue. It is a component. Citizenship is a very, very important component of a modern state. It is an identity for a modern state. Citizenship is an identity. And not for proper functioning. In order to make a state functional, citizenship is must. Because it will become dysfunctional. Citizenship is so important. Then you are right. Citizenship is a contract between citizen and state for assured security and welfareism. To protect, means you are right, but like you can bring a little bigger word of sovereignty. How external aggression and sovereignty is connected. Bypassing citizenship creates challenge both in resource and capacity of the state. No, matlab, if a state tries to bypass citizenship, then it will not be able to evolve. That is why construct. It is asking construct. Then democratic politics creates citizenship based on intelligent differentia to remove alien from it. The first point, as you are saying, the second one, that will be very important. The shared aspirations and dreams, and which are linked with your historical tradition, means custom tradition. So that is not, that can be included. Nahi, it is must. It is must. Then only citizenship can be created. It is a must. Citizens can only come through a collective grief and a collective aspiration. Without that, it cannot happen. Redressal of grievances through procedural democracy, that is constitution, obviously. Like, then you can take example of India, Citizenship Act 1935. However, there is a growing demand for differentiating or differential ability in citizenship from multiculturalism principle. World is a global, in one global village. Refugees have no home. So you can say there are dimensions beyond citizenship. There are dimensions beyond standard state. जो concept है, standard जो principle है उसके beyond है. तो very true. Refugees have no home, but then is any state is ready to bring those refugees and give them citizenship? No. Citizenship principle is discriminating to humans. So as a critique, you can say, and that too also invariant because it is asking how democracies construct citizenship. So think of the US, how the colonies came up together and then through constitution they provided citizenship, and then to the race, then to the black American blacks, and then how women also got voting rights. So you could have raised the question that all the citizens of a nation are not getting right to even vote in one go. Are they complete citizen?
So democracy construct citizenship, वोट ऐसा करके कुछ हो सकता है. So proper maintenance of citizenship becomes lead to. So it's very important. It's integral. Like like Han Chinese, they are. We have been talking about it, that how they are in Tibet, how Han, Han Chinese are now Tibetan Chinese and Han Chinese, but citizenship is one. Hong Kong and China, one nation, two systems. So that's how you can very beautifully illustrate. Or you could have even taken example of how in how the Czechoslovakia, Czech and Slovakia, they became different. Citizenship. Both have, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरा देश में जाके कुछ भी कर देंगे. तो है ना. और इवन कोसोवो, the Kosovo or Macedonia, and then one line would have been there for long struggle, whether it is of Kurdish struggle, whether it is Palestine, whether it is one example you could have given, whether it is the in Canada, what is that called? Oh, kya hai wo jo, that enclave is there, French enclave in Canada. I'm not recalling the name. Quebec. And in yeah, Quebec है ना. हाँ, क्यूबेक आ जाएगा. और नहीं तो स्पेन में है वो कैटेलोनिया. बास्क वो 10 में से 8 नंबर आएगा ही आएगा, कोई रुक ही नहीं सकता. चलिए आगे. What is the structure and functions of International Court of Justice, and we have to comment on that. So ICC, International Court of Justice में ICC कैसे लिख दिया भाई? International तो अलग. Oh my God, so that shows pressure. So I agree, pressure handling is very important. So no worries. When one has worked hard, then calm down. One has to calm down. Nervousness is okay, but nervousness taking over the performance is not good, because it is bleeding us, and we cannot get anything out of bleeding. So be nervous, but don't give away the performance. Understand your nerves. So here आपने थोड़ा सा, no worries, it's okay. Examiner in optional will not forgive, because optional is very marked. Because उधर बड़ा लिख रहे हैं, बड़ा तो पूरा जीएस में चलता है. जीएस में कुछ भी थोड़ा गलत हो गया ऐसा ब्लंड तो, but and even you are writing in acronym, so तो और भी ब्लंडर हो. एक्रोनियम में कैसा माफ कर देगा, मुश्किल. Anyways, ICJ under United Nations system based on liberal international principle to secure UNSDR 1948 for the human. बिल्कुल सही बात. Structure of ICJ is criticized to be the 20th century 15 judge system having 9-year tenure, not eligible for reappointment, but mostly judges are from European Union and Western nations. Administrative machinery of ICJ in Secretariat is also Eurocentric, and qualification in language and rules is also there. Function of ICJ is to secure peace between nations, but it is hearing legal dispute between nations. For example, the EEZ issue between Philippines and China, but not reaching up to conclusion even after giving its judgment. No impact is there on powerful nations. It is though it gives opportunity for arbitration, but then it is not powerful enough. Like United Nations reforms are required here also. In spite of upholding the human rights principle under Vienna Convention, there must be much more done by the global powers in order to make sure that international governance system is not collapsed or dysfunctional. It has got an important role. So without creation of a new institution, this institution itself must be reoriented, and there must be legal enforcement, and the non-adherence to ICJ direction in genocide case against Israel by South Africa, as we already given this example. This is good. So to increase the functionality, as I already said, so you could have just changed the way you are writing. It will become more smooth. You have a lot of understanding, and you will be more innovative. Budgetary allocation, UNGA, that's all fine. But then you can say your words with your core inside. What actually do you feel ki hona chahiye? Why only Israel? There have been Rwanda. There have been case of Kulbhushan Yadav. Not just Kulbhushan Yadav. There have been role of other countries also. तो एक दो एग्जाम्पल आप लाइए, प्यार से लाइए और बस नंबर ले जाइए. Comment on the structure. Discuss the structure and function of the UNSC. Is the main organ under UN in New York. System based on idealistic principle and collective security method.
if you have to just rephrase it, because it is again asking to comment. So you could have written that United Nations Security Council is soul of United Nation, but the idealistic principles and the collective security method have failed long back. As the world peace, which must be upheld through cooperation and enforcement of mandate, is always twisted and tweaks, thereby not showing the real character of UNSC, because it is asking you to comment. The structure of UNSC under P5 is biased towards the interest of the big five, rather than saying old archaic word and all that. Everybody knows that, but it is, you can use those, you have to comment. Therefore, Asian continent must be represented with India in a reformed way, and on paper, UNSC can be overruled by the mandate of UNGA, but it requires assured cooperation on a large scale, which is missing. For example, you can raise your Convention on Terrorism, or even climate change, or even the crisis which had been going on in, for example, Libya, or what is happening in the what Israel and West Asian problem, or even Ukraine, Russia. So मतलब आप वाकई सोचिए कि यूएनएससी क्या एक डेटरेंट है? नहीं है वो डेटरेंट। क्यों नहीं है? वेस्टेड इंटरेस्ट। क्यों वेस्टेड इंटरेस्ट है? Because no nation is ready to move beyond protectionism, beyond its luxury of achieving all the resources. ऐसा करके आप कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। However, the functionality is reduced, जैसा मैंने बोला है, आपने नीचे लिखा तो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बोल दिया कि P5 to secure their narrow interest, differential power nation, power, lack of UN mandate, वो हमने बोल ही दिया। नॉन एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल बोल दिया। जैसे आप बोल दीजिए कि भाई 100 साल जा रहा है, मतलब अभी 100 साल मान लो कोई प्रॉब्लम को एग्जिस्टेंस होते हुए हो गया, चाहे फिर वो रिफ्यूजीज है, देन द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज है, देन द प्रॉब्लम ऑफ even peace, like the way Africa is being used as a mercenary ground by not only US but by Russia also, by China also. इंडिया तो वो नहीं कर रहा है ना, इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है, तो यही वाला बात है। इसीलिए हम तो सोच भी रहे हैं ऐसा। सो ब्रूट पावर will not alone solve the, ऐसा करके कुछ भी लिख के आप एंड कर सकते हो। चलिए, explain the major features of Indian foreign policy in the 21st century. Explain the major features. Has been evolving over a century. Then again, you could have written Indian foreign policy traces its roots from a legacy of ancient times, linked with elements not only from Kautilya's Arthashastra and Ashoka but also from Cholas. ऐसा करके कुछ भी लिख देते, हो गया। क्योंकि वो जब कह रहा है 21st सेंचुरी, तो पहला हमने बोल के हमने 2 नंबर ले लिया भैया, क्योंकि 21st में तो कुछ भी लिखेंगे ना अभी। फिर वो बोल रहा है एक्सप्लेन, फिर आप लिखिए इट इज इवॉल्विंग ऑब्वियसली। तो मूविंग फ्रॉम नैम टू मल्टी अलाइनमेंट, शोइंग द स्प्रिट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये देखो 3 कीवर्ड्स आ गया इसमें, नाम आ गया, मल्टी अलाइनमेंट आ गया, और स्पिरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आ गया। तो आप इसको ऐसा लिखने की बजाय आपको सिर्फ लिखना था कि वन ऑफ द फीचर्स इज द स्पिरिट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विच हैड ऑलवेज बीन देयर बट नाउ एग्जाम्पलीफाइड बाय। कैसा एग्जाम्पल? अभी हम 21st सेंचुरी में, ये तो पहले भी था ना, मतलब जैसा वर्ड था हम वैसे भी थे पहले। नाउ एग्जाम्पलीफाइड बाय मल्टी अलाइनमेंट। तो फिर आप लिखते यूएस के साथ हमने मान लो कॉम कासा या कुछ भी, फिर साथ एक यूएस बोल दिया, एक रशिया का बोल दिया, दोनों साथ में बोल दिया। देखो भाई, दोनों चीजें हमारे पास, हम सोशलिस्ट मॉडल माइंडसेट से नहीं कर रहे हैं। अचीविंग द स्टेटस ऑफ ग्लोबल पावर लीडिंग टू साउथ साउथ डिप्लोमेसी, ऐसा भी नहीं है। आप इसको भी बोल सकते थे, सेकंड फीचर इज टेकिंग अलोंग all impoverished and non-represented nations as India's economic growth rises. ये हमारा फीचर है। पैसा सबके पास है, हमारे पास नहीं था, तो अब हम एड लेते नहीं है, अब हम एड देते हैं। तो हमारा फीचर क्या, हम सिर्फ एड नहीं दे रहे हैं, हम रास्ता भी दिखा रहे हैं, हम सबको साथ लेके रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। तीसरा, टेकिंग अलोंग टैग 2-3 डिप्लोमेसी।
with not only with not only powerful but also with other nations. प्रवासी भारतीय दिवस है, या फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा लिखते हैं, आप काहे नहीं लिखे कि पिछला 40 साल में पहली बार यहां गए, एक लिख देते कुछ भी। कैसे हिम्मत आया? टीचर हो गया, 5 चलिए आगे। मिनट। हाँ भाई, 5 देखो भाई, 5 देखो, आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। इसको बस थोड़ा सा 1 सेकंड का करना है, ये तो आप लिख ही रहे हो, इतना बढ़िया है ये तो। फोकस ऑन मल्टीलेटरल रिफॉर्म। अब उसके लिए बोलिए बस इतना, वन ऑफ द अदर फीचर इज कॉन्स्टेंटली रेजिंग द राइट्स एंड डिमांड्स ऑफ इंडिया ऑन ऑल फोरम। यही लिखा है आपने, मल्टीलेटरल रिफॉर्म। मैंने उस बात को बस बदला, आपने जो लिखा मैंने वही बोला। आप अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर नहीं माने ना, आप लिखते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइजिंग बाय इंटरनल बैलेंसिंग। ये अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट नंबर 5 इज फाइन, वेरी गुड। ह्यूमैनिटेरियन एंड एड डिप्लोमेसी टू इंक्रीज गुडविल अमंग द नेशंस। नहीं, ये मतलब यार फीचर फीचर है, जैसे आप बोलते टेक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा, हमने टेक्नोलॉजी को भयंकर यूज किया है। क्या है, मतलब जनरल सा पॉइंट लिख रहे हैं एकदम। अरे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हम इतना भयंकर है, कोई है ही नहीं इतना। तो ये हमारा फीचर है ना फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है हमने इंडिया का हार्ट, इंडिया का दिल और विश्व का दिल, दोनों को हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? आप देखो, हमारा चीजें यूपीआई है और डिजिटल करेंसी से लेकर मंदिर बाप में बन गया, ये फॉरेन पॉलिसी है भाई। कोई मंदिर नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा है यार, आपको मतलब सिंपल, आपने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन पंगा ये है कि ये इतना भारी है कि इसमें एग्जामिनर वाला नंबर देखेगा तो भाई जो भी है, मतलब आई एम सॉरी टू वर्ड टू बी अवॉइडेड, लेकिन माय पॉइंट इज कि बहुत सारा प्रेशर है, ह्यूज प्रेशर। हाउ टू फिल्टर नहीं होगा। व्हाट आर द रीजंस फॉर लैक ऑफ regionness in South Asia? What are the reasons for lack of regionness in South Asia? So least integrated region in the world. चलो भाई, आपने ऊपर आंसर लिखा था, आपने लिख दिया। अरे पहले आप लिखते कि साउथ एशियन रीजन दो endowed with lot of natural, geopolitical, cultural connectivity, but still the least integrated। अरे जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं, काहे को? पहले आप बताओ, पहले लड़ना है, पहले बताना है कि नहीं भाई ये सब है उसके पास, फिर नहीं कर पा रहे हैं। फिर चलिए रीजन बताइए, बिल्कुल सही बताया। चलिए, टेरेन ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, हिमालयन इन द नॉर्थ, डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो है। लेकिन इसके लिए हमने ह्यूमन जो मतलब स्टेट का जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, या जो जियो पॉलिटिकल रीजन है, उसके वजह से वो है। लेस ह्यूमन डेवलपमेंट, हैविंग पॉवर्टी एंड अदर चैलेंजेस, मतलब दिस इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। लेकिन आर यू सेइंग कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ जाएगा तो क्या साउथ एशिया बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा? कहाँ श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहा कनेक्ट। तो कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? कनेक्ट होने के लिए ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द म्यूचुअल एबिलिटी टू कम विद द कोर इश्यूज एंड टेकिंग देम। फिर टेररिज्म लेके आते, फिर आप टेररिज्म काहे नहीं लाए सबसे ऊपर? टेररिज्म लेके आना चाहिए था। टेररिज्म इज वन ऑफ द रीजंस। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा, धड़ खत्म नहीं होगा, तब तक सबका सर दर्द रहेगा, और ऊपर से चाइना का डंडा। चलिए आगे चलिए, आपने लिखा भी है नीचे, प्रेजेंस ऑफ रॉ स्टेट पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक क्राइसिस इन म्यांमार, बांग्लादेश आर ए ग्रेट हर्डल फॉर क्लोज इंटीग्रेशन। वो तो मानने नहीं रहे वो लोग, प्रॉब्लम है वो लोग तो आराम से ऐसा लड़ रहे हैं घर में, और वो मानते ही नहीं उनका प्रॉब्लम, हम मान रहे हैं उनको प्रॉब्लम। इनसिक्योरिटी डिलेमा ऑफ नेशन ड्यू टू इनसिक्योरिटी डिलेमा ऑफ नेशन। ये तो मतलब कौन है डिलेमा में? इंडिया इज नॉट इन डिलेमा। वी आर वेरी क्लियर दैट हाउ नॉर्थ ईस्ट, अभी हम उसको हमारा, आप बोलिए कि इंडिया विजन ऑफ नेक्स्ट 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 20 ईयर्स का विजन है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का। दैट ऑल्सो इंक्लूड एस्पेक्ट दैट इट इज कनेक्टेड टिल थाईलैंड, मतलब फिर आ जाएगा वो साउथ एशिया का कनेक्टिविटी। दस टू रीजनल कोऑपरेशन फोकस ऑन फंक्शनल अप्रोच। अब आप यहाँ बिल्कुल फंक्शनल अप्रोच थ्योरी आ गया, बिम्स्टेक आ गया। तो मतलब ये थोड़ा सा और मतलब सब कुछ पता होते हुए और मतलब डिफरेंट हो सकता था हल्का। Why is the compromise reached at WTO regarding the COVID-19 vaccine manufacturing, not a trade-related intellectual property? This is a favorite area of yours, I think. In WTO, COVID-19 vaccine diplomacy made by developing countries like India raised question over IPR issue caused by big pharma raising concern
Over public health, India reinforced the spirit of compulsory licensing, that is generic medicine under Doha round or Doha spirit. You can say this compromise was reached such that new vaccine trials need to be adhered to IPR, but IPR will be temporarily suspended till the COVID-19. This created a channel of compromise between IPR and quality versus public health and affordability. This leads to creation of vaccine channel of affordable medicine and therapeutic drug cases, broader concerns, and good medical practice. I think fair enough. No worries, you have written well. Why do the ethnic conflicts and insurgencies continue to remain major impediments to regional cooperation in South Asia? Why do the ethnic conflicts and insurgencies? Regional cooperation in South Asia require the countries to come together and create a sustainable communication and trade commerce channel. No. The regional cooperation in South Asia require the countries to come together and to address the issues of the ethnic communities. सबसे पहले वो अगर सॉल्व होगा तो कम्युनिकेशन और ट्रेड कॉमर्स फिर सेकंड आ जाएगा. So we have to in political theory, according to political theory, this can go parallelly, but this cannot come first. That ethnic conflict and insurgency cannot be only solved through highways, roadways, schools, and all that, like the way we had seen in case of Naxalism also. So both the parallelly will go. So development भी चाहिए, लेकिन healing भी चाहिए. So you can't say that sustained communication, trade, commerce, सबको satellite phone दे देंगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं होगा. Sustained violence creates mindset of alienation of resources and developmental process. Very true. So what should be done? What should be that? That is the whole point. It erodes the trust between nations due to baggage of insurgencies. So again, solution to the new generation. New generation is coming. So what message you are going to the new generation? It do not want to live like 1940s. Its idea of patriotism is different. They want to embrace. They have the digital persona. They have so much connectivity. So you cannot just talk about sitting in a, like हम बोलते हैं कि एसी में बैठ के हमने कर दिया, ऐसा नहीं है. Business environment impediment, so that is again security plus development. So to deal with the regional ethnic conflict, each nation should approach it case by case basis. Cooperation with neighbor, for example, Operation Sunrise in Myanmar. So that is only one point. That is only one aspect, that Burma is not giving shelter to the insurgents. That is one aspect. We become so powerful that insurgents are actually fearful. Or Manipur, Kuki Meti issue must be resolved through healing, must be resolved through our political willpower, our political culture. Our executive must take action. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए. So above the political vested interests, ऐसा करके कुछ हम लिख सकते हैं. इंस्टीट्यूशनल चैनल तो बन ही जाएंगे एंड रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट भी हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है. तो आप एड्रेस कीजिए कि क्या जो एथनिक कम्युनिटीज है, चाहे वो नागा है, ग्रेटर नागा का डिमांड क्यों करते हैं? जब उन्हें लगता है एलियनेट हो रहे हैं. लेकिन उनको अगर पीस, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा थ्रू ब्यूरोक्रेसी एंड थ्रू पॉलिटिकल कल्चर. फॉर एग्जाम्पल एन रवि सर वॉज देयर. व्हेन एन रवि सर वॉज देयर, लॉट ऑफ इश्यूज वर रेज्ड. दैट्स व्हाई ही वाज रिमूव्ड. अभी तो लेकिन न्यूज में नहीं आता इतना. सो हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू परस्यू, हाउ टू क्रिएट द कल्चर ऑफ ट्रस्ट, that is very important. So that is how you could have brought some political theory also over here. Politics is all about possibilities. When the parties can change, when the leaders can jump to one party to another, why not the problems in Northeast can be solved? The question arises: is the youth of Northeast is not interested in peace? The answer is yes, they are. Enough political willpower, resource mobilization. अगेन वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पॉलिटिकल अल्टर पे. What diplomatic steps has India taken to articulate the interest of the global South in international politics? Diplomatic steps. India has been the voice of global South since independence. For example, voice of Korea and Vietnam in UN. Diplomatic steps. So first diplomatic step is that India had always spoken for the South whenever time arises. For example, Korea 1950, Vietnam 1970, and continued this legacy even in the present times when showcasing the global challenges it had been standing with even Pacific. ऐसा करके Pacific nation है, जो भी लिखना है, जो भी मतलब करके हो गया पहले. Food and economic aid to global South for people to people contact, loan to Nigeria. This is not a diplomatic step. ये तो हमारी ये हमारा ये हम जो बोलते हैं विश्व गुरु बनने का हम बात करते हैं,
और जब हम बोलते हैं इंडिया ग्रेट नेशन हो तो उसको करना ही चाहिए डिप्लोमेटिक स्टेप. सो डिप्लोमेटिक स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द नीड of understanding the need of a country in crisis. Understanding the need is a diplomatic step. जैसे वैक्सीन मैत्री आपने नीचे बोला है, वो वैक्सीन मैत्री है डिप्लोमेटिक स्टेप. तो वैक्सीन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नीचे आएगा, वैक्सीन मैत्री मतलब बात बड़ा आएगा पहले. रेजिंग कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ और इंटरनेशनल फोरम, नॉट रेजिंग, मेकिंग श्योर इट इज हर्ड इज अ डिप्लोमेटिक स्टेप. रेज तो आप कर ही रहे हैं, तो मतलब आप बात समझ रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं ऑब्वियसली. Creating alternative finances and technological south, ये बस अच्छा पॉइंट है. ISA for solar energy and CDRI for disaster resilience. Having huge investment driven diplomacy, गुड की वर्ड. सो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, ये सारा ऐसा कुछ करके बना दो यार खुद ही. क्या दिक्कत है उसमें, कौन पूछ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? हमारा पूरा जहाज गया था, पूरा एक नेवी का पूरा वर्ल्ड को घूमने, फीमेल गया था ना लेके, फर्स्ट राउंड मारा था. India is an inspiration. India is an inspiration for global south. Indian women, they look forward to Indian women. हो गया बस, आंसर खत्म. इतना ज्यादा पता है आपको कि मैं तो मतलब बहुत आता है, इतना सारा आपको आता है. चलिए नेक्स्ट. डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ normative ethos of non-aligned movement in magnifying India sought for in pursuit of a national interest. Discuss the relevance of normative ethos. So non-aligned movement was a landmark movement which defined the relationship between developing and developed nations over a diffuse bipolar world with India in the lead. ये लाइन का है, with India in the lead. बांगडूंग कॉन्फ्रेंस 1995, जवाहरलाल नेहरू स्पीच सेट. अब जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा ना इंपॉर्टेंट था, नाम है ये. तो विद इंडिया इन द लीड. क्वेश्चन देखिए ना, इथोस मांग रहा है वो, इंडिया इन द लीड. तो नॉर्मेटिव इथोस आपने बहुत अच्छे लिखे, बढ़िया इथोस है, वंडरफुल. डिकॉलोनाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस, हो गया, नंबर आ गए इसमें, खत्म. सॉफ्ट पावर इन प्रोग्रेस, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट, मेड इन इंडिया, रिस्पॉन्सिबल पावर, स्टैंडिंग फॉर वनरेबल कंट्रीज, इंडिया क्रिटिसिज्म. एक पेपर में एक ही एग्जांपल एक टाइप का लाइए, दोबारा लाना ही नहीं है. मल्टीलेटरलिज्म इन थिंकिंग, मेड कंट्री इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, ट्रेड एंड कॉमर्स, गति प्रिंसिपल. देखिए कितना अच्छा है. इंडिया ने इथो दिया है. हमारे यहाँ अफगानिस्तान के भी ऑफिसर ट्रेन कर रहे हैं, मालदीव का भी ऑफिसर ट्रेन कर रहे हैं, हमें आंख भी दिखा रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते. हम सबको CDS से पास कराते हैं हमारे पास. दस इंडिया नेशनल इंटरेस्ट मोर सक्सेसफुली सिक्योर्ड. इंडिया नेशनल इंटरेस्ट इज इनलाइटेंड बेसिकली. सिक्योर तो होना ही है, वो इनलाइटेंड है. ऐसा होना चाहिए ना आपका कॉन्फिडेंस कि हमें थप्पड़ मारेगा तो जान से मार देंगे. थप्पड़ तो मार दो लेकिन हम जान से मार देंगे. खत्म, बात ही खत्म. सिलेक्शन तो चाहिए, कोई बात नहीं, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए. डर आएगा, लात मार दो, बात ही खत्म. Economic interdependence in the South-South cooperation, securing oil energy, maintaining strategic autonomy. I think wonderful point. However, in some areas, non-ethos were breached by the members' national interest by support to power. ये आएगा नंबर, देखो कितना अच्छी बात बोली कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, कश्मीर को अभी तक इशू बना के रखा हुआ है, मतलब इंडिया के साथ धोखा हुआ बेसिकली. हो गया बस. So the relevance of ethos of NAM has importance only when it is backed by hard power. Slowly, India is moving towards multi-alignment system. Now India has a robust system of channel which supports its national interest through issue-based approach. Therefore, modern NAM 2.0 ethos is based upon reform in multilateral institutions, South-South cooperation, aid development by India, functional approach-based cooperation. I think one of the best answers. Idealism अर्थशास्त्र हो गया. चलिए. So the next question is, in what ways does the functionalist approach in international relations help in maintaining peace and order in global politics? Functionalist approach. चलिए. Functionalist approach helping in maintaining peace and order in the world. So functional approach is based on the idea that every nation has certain core and periphery issues in terms of national interest. If there is certain areas that can be brought under cooperation, then other areas would be followed slowly. I agree, but then functional. So function has to be decided. Primary function, peripheral function, what function you will take. So पहला वाला पैरा में थोड़ा चेंज होना चाहिए. Formation of EU was not based on political unification, and rather it was done through a dues areas like cooperation. So function हो गया ना. Iron and war is a function, and then slowly market integration also became a function. Iron coal. Iron and coal. ठीक है. Thus, functionalist approach helping maintaining peace and order because it is fulfilling the economic stability and giving economic stability and human development. That is why it is working.
Cooperation between adversary nation, do's and areas, leaving do's and don't for mutual benefit. For example, India, China, trade and commerce, but not on border management. इससे बेस्ट इंडिया भी इसका, इंडिया पाकिस्तान भी इसका एग्जांपल है. दे आर शेयरिंग द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, दो एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज प्रॉक्सी प्रमोटिंग प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया. तो फंक्शनल हो गया ना, फंक्शन तो हो रहा है, फंक्शन वो अपना फंक्शन भी कर रहा है टेररिज्म बढ़ा के. उसका प्रायोरिटी है वो टेररिज्म बढ़ाना, हमारा प्रायोरिटी है कि जो हमें करना है. तो फंक्शनल अप्रोच इज दैट. इनफॉर्मल वेज ऑफ कॉपरेशन, ट्रैक टू एंड डिप्लोमेसी आप लेके आइए इसमें. राजस्थान डेवलप ठीक है, ये सब ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल रशियन ऑयल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फंक्शनल अप्रोच. यूरोप कैसे जिएगा, अंधेरे में मर जाएगा. इंडिया ने ले लिया, इंडिया पिक्ड अप द बूस्ट बिकॉज इंडिया हैड कैपेबिलिटी टू एब्सॉर्ब. इंडिया इज ग्रोइंग, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. तो ऐसा करके आप कुछ लिख सकते हैं. एंड डोंट एरियाज बिकम्स लेस कंसर्निंग. नो, डोंट एरिया होता है. अब चाइना ने किया ना, कोविड के बाद नुकसान किया. वी स्टिल डोंट नो दैट फ्रॉम वेयर कोविड स्टार्टेड. उसका कोई आज तक वो कौन सा लैब था, कहाँ था वो, वांगहू है, कौन सा मार्केट था, अच्छा वो वुहान. हुआंग, हाँ हुआंग. तो उसका हाई जो सिक्योरिटी लैब का अब तक क्या रिपोर्ट है, कुछ पता ही नहीं अभी तक. बट इन द फील्ड फंक्शनिस्ट अप्रोच इज नॉट द सॉल्यूशन. नॉट फॉर एवरी सॉल्यूशन. वेयर कश्मीर इशू एंड टेररिज्म, ये फंक्शन नहीं, ऐसा नहीं सॉल्यूशन है फंक्शनल अप्रोच. ज्यादा बोलोगे. नहीं सर, सर फंक्शनल में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री बीच में रिलेशन है, तो आप पहले आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर इशू नहीं है दोनों के बीच में, तो वहां पहले स्टार्ट करेंगे, तो फिर कोर एरिया चूज करें. लेकिन इंडिया के साथ पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया पाकिस्तान का बेसिक जो है ना वो टेररिज्म और कश्मीर है. जब तक पाकिस्तान विल नॉट एक्ट ऑन टेररिज्म, इंडिया विल नॉट सपोर्ट एवर, इसलिए वो वहां पर नहीं बैठता. इसलिए वो मैंने उसको हाईलाइट किया था. Functional approach more effective, focus on small gesture. Track 1.5, I think well written. People to people contact, create. These answers are much better written. So we are going to see in the part 2 of our discussion. Thank you very much.